वी आर इन दिस होई आन टाउन नाउ और आज कुछ स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था. इवनिंग में प्रॉब्ली वी विल बी विजिटिंग दानांग सिटी. और अभी वी जस्ट केम आउट, एक छोटा सा बाइसिकल राइड ले रहे थे. तो वी कम टू दिस वेरी नाइस एंड कोजी लुकिंग कैफ़े. यहाँ पे कैफ़े कल्चर यहाँ भी बहुत है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं. तो वी जस्ट केम टू दिस पर्टिकुलर कैफ़े. और गर्मी बहुत है इस समय, सो प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग इज़ टू कम टू एनी ऑफ दीज cafes and enjoy some cool drinks. You get beer. Actually, beer is very easily available here, so you can have beer, you can have iced teas, cooler ice creams, or whatever you want to have in drinks. You can get plenty of options here. This is the old town area, and this is how the cafe looks from outside. And just in front of this cafe is this beautiful building structure. I don't know what exactly is this, but बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी इस समय compared to the evening hours when it is fully crowded. So we took the free bicycles from our resort Karma K3 to take a tour of this iconic city during the daytime. The ride to this ancient town from our resort was roughly 15 minutes, and during the day this was a totally different place compared to the evening time when it gets totally flooded with the tourists. और यहाँ देखिए दिन के टाइम में ये होई आन टाउन कैसा एकदम डेजर्टेड सा दिखाई देता है. यही शाम होते होते ही यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी स्पेस टू वॉक प्रॉपर्ली ऑल्सो. इनफैक्ट ये तो ओल्ड टाउन से बाहर का एरिया है थोड़ा सा, बट दिस इज़ ऑल्सो टोटली क्राउडेड ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स आफ्टर 5 or 6 PM. थैंकफुली अभी थोड़ी सी हवा चल रही है तो इसलिए साइकिल चलाते वक्त ठीक लग रहा है, बट अदरवाइज़ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली हुई दिखाई दे रही हैं, बट अदरवाइज़ मोस्टली मैक्सिमम शॉप्स जो हैं वो क्लोज्ड ही होती हैं. इवनिंग आवर्स में ही ज़्यादातर खोलते हैं यहाँ पे. और यहाँ देखिए सड़कें कितनी खाली खाली हैं, बट जगह बहुत ही खूबसूरत है.
I am inside the old town market of Hoi An, and right now this is the starting point from where the old town market starts. And behind me is this complex. So this is the shopping complex where you get the option to get your clothes stitched. There are a lot of ready-made as well as clothing items. And Hoi An is basically famous for stitching the clothes, especially leather goods. So this is one market if you're interested to get a suit, a coat, a blazer, or a leather coat. Probably this is the market where you can come. And further as you go down, you'll go inside the Old Town Market. This is basically the walking and bicycle street. So in this street, motorized vehicles are not allowed. So it's a totally a walking street, and you can come by bicycle also. That's what we have done. And beautiful street. And I just came to this shop where I just changed my currency, and you get good exchange rate here. This is just in front of this temple. जैसे जैसे शाम होती जा रही है थोड़ी सी भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे. In some time this street will be fully crowded.